Okay, ji, kindly be attentive. So, first of all, I have just displayed today's learning outcomes. First of all, the recap. Previously, we have been discussing a repetition structure in which we have seen in order to repeat certain sequence of steps which are true for many other entities. Now, those entities could be the individuals of a class, means students. Those entity could be something with respect to the library management system. Those entities could be the patients. Those entities could be the passengers traveling in an aeroplane. आपने लूप की repetition करनी. Certain sequence of steps है. We have to, and those sequence of steps are true for every entity, for every individual. For example, in this class. So let's say sequence of step is, again I want to find the average of the class. So the first step is prompt the user to enter the marks for first student. Second is get the input of marks from the user. Third step is to accumulate these marks to the running total, a variable which we have. And the last step is increment student counter by 1, which will indicate a student has been processed. So do you think these 3 to 4 steps are true for every student? हर स्टूडेंट के केस में हमने यही काम करना है, isn't it? So when we come across such a scenario, it means we should be inside a repetition structure, a loop. Then if the number of repetitions are already known to us, we already know the number of students are 50, in our case 50 students. So loop will be controlled by that counter of 50. So such a loop which is controlled by the counter, starting value of the counter is 1, and counter has to reach up till 50. So loop will be controlled by this counter. Such loops are called counter control loops. And by the end of the previous lecture, we have bit altered our problem statement. We said number of students are not known. User can stop at any time instance, stating compute the average. I have input 5 students. Tell me the average of those 5 students. In the other scenario, user might say I have input 15 students. Tell me the average of 15. Now, how will program know when to end? How will we are going to compute the average? Sir, we will have a value, let's say, Okay, one by one. we can have an arbitrary value like -1 whenever that value is entered, so the program stops. Okay, one scenario. Ji. Anyone else? Kindly raise hands. Ji. If statement and break statement. That could be one of the ways. As we know, in programming there are many ways to do a particular problem, but that way should be, first of all, it should be the correct way, syntax wise, and semantic wise, logically it should be correct as well. So there are many ways. So one could be, let us discuss that possibility, that we have to differentiate between the valid input and invalid input. We will prompt the user to enter valid input or invalid input. For example, valid input is 0 to 100 and invalid input could be -1. So we'll say, we'll prompt the user either enter this or enter this to end taking the input. So this is how the program knows when to end. So we have a variable with us called grade. User will input the data, for example, 70 marks for a student. Are they valid or not? So anything which actually makes this condition true is a valid thing. Until and unless user enters -1, which will actually state it's an invalid entity. And this -1 is actually called Sentinel value. So the loop which is controlled by this different value, which must not be confused with the regular input, is called the Sentinel value. And such a loop is called Sentinel controlled loop. Then how we are going to make changes in the while loop, in the condition? Usually we write
run the loop till the time counter is less than equal to 10, isn't it? Repeat the loop 10 times. Now this information is not available to us. We don't know how many times we have to repeat. We only know this, either valid or invalid. So how we will going to write the condition for while? First of all, we will put condition on this variable, right? Correct? इसके अलावा आपके पास वेरिएबल्स कौन से हैं? एवरेज कंप्यूटेशन में टोटल काउंटर भी है. So total is no more there. Counter we don't know how many repetitions. So this is the only variable left, isn't it? And this is related to this. What is user entering? Valid or invalid? So keep on running the loop till the input is valid. How we are going to write this in condition? Keep on taking the input means grade. Keep on taking the input till the time grade is not equal to. So if grade is 10, true, 20, 30, 40, anything. So what if Becomes- it is negative 3? Even then it will accept. Because you have prompted the user either enter valid value or invalid value. उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरह करनी है वो अलग बात है. ठीक है, वो आप उस पर चेक लगा सकते हैं. कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसको लेट से परसेंटेज कर दें, विद इन रेंज लिए हैं. 1000 है तो परसेंटेज 100 कर दें तो वो मैक्सिमम 100 ही रहेगा. There are other ways to catch that exception. But over here we are discussing this thing either valid or invalid. So this will run until you press -1. So this is something we will be discussing in the next couple of slides along with the related examples in while loop Sentinel control structures. Sentinel value is this one. Related example, then we will come across multiple selection structure. Although we have discussed if is a single selection structure. We of course appended it with if else. Now we say in real world there are scenarios we have to not decide upon a truth or falsity of a condition, rather we have a range of values to decide upon. Grading scheme is a typical example. If student has a particular grade, so we need to have a nested if else in that scenario, isn't it? So we implemented that previously. But if we come across a menu, if we come across such a situation, we have been asked to press this for that, press this for that. For example, real world scenario, your ATM. Press this button for money withdrawal. Press the second button for balance inquiry. Third button for some other transaction. For your statement, so on and so forth. You call a cellular company. You listen to the menu. Press 1 for this, 2 for this, 3 for this, 0 for operator, isn't it? So such scenarios are definitely recommended to be implemented using switch multiple selection structure, in which we have to make selections based upon multiple values which user is actually inputting. So this is the actually today's outcomes we'll be discussing. So class averaging problem, as we discussed previously, we have discussed it in some minor perspective previously, but over here we are discussing it once again. Sentinel value is something which indicates end of data entry. Because the problem states develop a class averaging program which will process arbitrary number of students, means this is not valid. We don't know the number. Unknown number of students. So we have couple of problems with us. Unknown number of students. How will program know when to end? This is how program will know when to end. We will prompt the user ourselves using this value, which will indicate the end of data entry. Loop end when Sentinel is being input. Sentinel chosen in such a way should not be confused with the regular input. Now this is something called Sentinel value -1. It could be -2, -3. But formal भी एक Sentinel value होती है. And that value is EOF, end of file character. And that character is actually control Z or control D, depending upon your operating system. So we have a formal definition of Sentinel value available
to us as well. For the time being, we will be using -1, not to confuse ourselves. But formally, we have a Sentinel value as well, and that is end of file character. And that character is Control D. It's a control symbol, the control key on your keyboard. Control D or control Z or D depends upon operating system. That whenever you press this combination, it indicates end of data entry. Sir, can we use the string as a secondary value? Then input should be that character value as well. We can use that. It's an open thing, but accordingly data type should be there. अगर ग्रेड 100 तक गया तो हम वैल्यूज नहीं यूज कर सकते 101 क्योंकि नेगेटिव तो मिल सकता है। हाँ नहीं, वो तो हमने अब कहा है ना, उसमें हम चेक लगा सकते हैं ना, वो तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं 101 भी आ गया, वो आपको चेक कर सकते हैं, एनीथिंग ग्रेटर देन 100 विल बी कंसिडर्ड एज 100. ठीक है, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन 100, ग्रेड इक्वल टू 100, हार्ड कोड कर दें. कंडीशन ही 101 दे दें कि इस पे वो ब्रेक हो. हाँ वो अब देखिए, अगर आपने वही उस कॉन्टेक्स्ट में बात की, एक चीज़ को करने का कई मेथड. आप काउंटर 0 से 9 चलाएं या 1 से 10 चलाएं, इट डिपेंड्स. दैट इज समथिंग राइट एज वेल. ठीक, तो फर्दर डिस्कशन ये जो है, दिस इज द टॉप मोस्ट लेवल स्टेटमेंट, डेवलप द एवरेज प्रोग्राम. जी लास्ट वर्ड, सॉरी, ये चीज एंड ऑफ फाइल. देखिए जिस तरह -1 है ना, आप -1 की जगह EOF भी लिख सकते हैं. ये एक फॉर्मल करेक्टर है विच C++ compiler has said that it is a formal Sentinel value. You can have your own Sentinel values as well. For example, -1, -2, -3, anything which is not correlating with the regular input. तो ये एक फॉर्मल वैल्यू है. आप ग्रेड इज नॉट इक्वल टू EOF भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है. तो एडेड इंफॉर्मेशन है जस्ट कि, और ये -1 किस तरह EOF किस तरह इनपुट होगा, इस तरह होगा. जब आप कंट्रोल Z देते हैं तो इसका मतलब है यू डोंट वांट टू फर्दर इनपुट द वैल्यूज. इट्स प्री डिफाइंड, डिपेंड्स अपॉन योर ऑपरेटिंग सिस्टम. Z है, कंट्रोल D है. अभी इसका रिलेटेड प्रोग्राम हम आज ही करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, ये स्विच की प्रोग्रामिंग में. What's control Z and control D for? Sentinel values. Wait, ठीक है. wasn't that EOF? EOF is actually implemented using these combinations. When you press Control Z, it means EOF, end of file. No, that is over created Sentinel value. This is something formal जो कि कंपाइलर है, और ये हमारी अपनी क्रिएटेड है. -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, कुछ भी रख सकते हैं. ये एसेंस है सेंटिनल वैल्यू. सो फर्दर इसको किया गया हमने इनिशियलाइज वेरिएबल्स, इनपुट द डाटा, काउंट द क्विज ग्रेड्स, कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज. नाउ वी नीड टू फर्दर रिफाइन दीज एल्गोरिथमिक पार्ट. व्हाट आर द वेरिएबल्स व्हिच शुड बी इनिशियलाइज्ड? टोटल टू 0, काउंटर टू 0, total 0, counter to 0. Now this statement further initialized. Now we have a problem over here. While grade is not equal to -1, ये तो आपने कर दिया. अब फर्स्ट स्टूडेंट का ग्रेड कहां से आएगा जो कि यहां चेक हो रहा है? If you recall the previous program which we have done using counter control loop, आपने यहां लिखा counter is less than equal to 10, isn't it? और यहां पर लिखा C out, enter grade. So you have the grade for first student. Now if loop is starting with the condition with the grade itself involved, so from where we are getting the input for the first user? Seen outside loop. Of course, एक ही solution है. Prompt करें यूजर को और सीन कर लें. सीन, so you have the grade value for the first student. Let's suppose it's valid. Come inside. Now what is the next step once you have the grade 70? Add it to the total. Total equals to Total plus grade. total plus grade. What is the next step? That was the counter that we had. Increment the counter. A student has been processed. Input ली, check की, valid grade है, 70 is valid grade. Add it to the running total. What is the value of total at the moment? 70. 0 plus 70.
So once this is done, counter plus add 1 to the counter. अगर उसकी वैल्यू 1 थी तो अब क्या होगी 2. Now you are over here. You are inside the loop. यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाएगा? Back to the condition. नेक्स्ट स्टूडेंट की इनपुट किस तरह लेंगे? यहाँ तो नहीं जा सकते. यहाँ पर देखिए. C out. Enter marks. Enter -1 to end. C in. Great. Now you got the input of second student. Let's suppose that is 30. Check. अब यहाँ से आपको कंट्रोल जाएगा. 30 valid or not? Valid. Total equals to 70 plus 30. 100. Counter equals to counter plus 1. Counter becomes 3. Sir, why do we need the counter? Yes. Important question. Why we need a counter over here? Because while calculating we have to calculate the total. Which variable you are going to divide it at the end to compute the average? Okay, the counter. Total will be divided by which variable? Something shall be counting the number of instances user is entering. So that's why you require a counter. But sir, where is the counter defined in the while loop? It is defined here. Definition part is there. You are just discussing the algorithmic part. Okay. It is there. Sir, To the 0. how does the thing go back again? Loop. Why does Loop it go states. back? Loop states once we are done with every step. Yes. If it's a while loop, don't go further. Go back again to the condition and check whether it's true or not. Right. So it is bound to go back to the condition. So once you have taken the input for the first user, first student, you are inside the loop. You cannot go beyond this line, this while condition. You are taking something, a student has been processed, get the marks of students within the loop. So it will go over here. If it is valid, repeat the process. Get the marks for third student. Keep on getting the marks until the user presses -1. So you are done. Just come out, divide this total by counter, and you have the. ये सब बात अभी जो हमने की, अभी हम यहाँ बोर्ड पे समझते हैं. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. Okay, the algorithm is actually stating over here, before going to while, input the first grade. यूजर मैंने आपको कहा था शरारती है, उसने आज से साथ -1 एंटर कर दिया. Of course, तो प्रॉपर मैसेज होना चाहिए डिस्प्ले, isn't it? No grades are entered. Your program should be smart enough. It should not go inside the loop, because loop is again heavy on system resources in terms of time and space. As a programmers, we are greedy in terms of time and space. We have to consume the optimized time and the optimized space. Algorithm is all about optimization of time and space, जिसको फॉर्मल नेम दिया जाता है बिग ओ नोटेशन. वो अब आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ एल्गोरिथमिक कम्प्लेक्सिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस. सो जितना कम टाइम जितना कम स्पेस, ऑफ कोर्स एट टाइम्स यू हैव अ डील. कोई मसला नहीं, टाइम का स्पेस कम है, सो इट्स अ ट्रेड ऑफ. यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन द टू. ये काइंडली डोर क्लोज कर दें लास्ट में. ओके, so once we have the marks for the first student, while user has not entered the Sentinel, isn't it? Sir, what's going to happen if the first input is -1? अभी डिस्कस करते हैं. अभी हम कह रहे हैं कि -1 नहीं है. अगर नहीं है तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं. Loop is continuing. So if it is not -1, you are inside the loop. At least one time आपका काउंटर चलेगा या नहीं? अगर आपका काउंटर 0 है और यूजर ने एक स्टूडेंट की वैल्यू एंटर कर दी, एटलीस्ट वन टाइम इट विल बी इंक्रीमेंटेड, इजंट इट? तो ये चीज एक नोट कर लें चीज कि अगर यूजर ने फर्स्ट ऑफ ऑल -1 एंटर कर दिया, क्या आपका काउंटर में वैल्यू होगी? अगर फर्स्ट टाइम एंटर नहीं किया, वैलिड है, तो क्या काउंटर में 1 होगा? यस. इस पे एक चेक लगा लेंगे. अगर काउंटर 0 है, नो ग्रेड्स आर एंटर्ड. If counter is non-zero,
it means 1, 2, 3, anything. It means compute the average. So while के बाद ये हम check लगाएंगे. If the counter is non-zero, it means something is there. Divide total by counter. Else इसका मतलब काउंटर इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है. यूजर ने आते साथ फर्स्ट इंस्टेंस में ही -1 प्रेस किया. दिस इज हियर इज द प्रूफ. काउंटर चला ही नहीं था. वाइल ट्रू ही नहीं हुई. काउंटर इज रिजाइडिंग एट zero state. So this means no grades were entered. Appropriate message should be displayed. So we are inside the loop. हमने ग्रेड लिए, रनिंग टोटल में ऐड किया, काउंटर इंक्रीमेंट किया, इनपुट ले ली नेक्स्ट की. वो वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है. इट कुड बी एनी. So we are inside the loop. Once it get broken, चेक लगा लें किस पर. If the counter is non-zero, what does this mean? Non-zero means loop चली है 1, 2, 3, 4, anything. Set the average to the total divided by counter. Else, this means counter was zero. अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको फर्दर यहां पर एलैबोरेट होती है. नाउ कम्स द प्रोग्रामिंग पार्ट. आप देख लें वो कितनी देर बाद आया प्रोग्रामिंग. पहले डिस्कशन ही हुई है, पेपर वर्क हुआ है, ड्राई रनिंग हुई है कोड की, एल्गोरिथम के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है. ऑफ कोर्स एक ग्राफिकल फॉर्म में भी बनना चाहिए. एंड देन कम्स दिस. जी, वाइल की बॉडी के अंदर आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं. वाइल के साथ नहीं. नो, उस तरह नहीं है. उसमें आप फिर फर्दर अलग से करके यूज कर सकते हैं. इफ एल्स इज समथिंग सेपरेट. वाइल्स इज अ लूप विद इन इटसेल्फ. इट स्टेट्स अगर बात ठीक है तो लूप चलाएं, अदरवाइज नॉर्मल फ्लो पे कंटिन्यू करें. जब आप नॉर्मल फ्लो पे आएंगे तो आप जो मर्जी कंडीशन लगा लें. ठीक. हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल वो क्या कर सकते हैं. आप चाह रहे हैं कि एल्स पार्ट में लूप चलाना, ऑफ कोर्स उसके लिए while if लगा के अंदर loop बिल्कुल आप एल्स करें, करली ब्रेसेस स्टार्ट कर दें, अंदर वाइल लूप लगा. while else नहीं कर सकते if while else होता है उस तरह करके होता है. while के नीचे नहीं, ये कहना चाह रहे हैं इफ समथिंग एल्स के पार्ट में लूप चलाना. नहीं वो पूछ रहे कि अगर while की loop अनट्रू हुई तो एक else लगा के आगे एक और while लगा सकते हैं या कोई उसके लिए अलग से. नहीं, every actually else is associated with the corresponding if. if के बगैर नहीं. Otherwise it is treated as a dangling else. ठीक है ना, वो भी एक प्रॉब्लम उसमें आ जाते. वो फिर कॉम्प्लेक्सिटी में उसकी आ जाएगा चीज कि वो dangling else ट्रीट होगा. मींस इट इज नॉट corresponding with any if. ठीक है, उस चीज को हमें देखना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, इसमें देख लेंगे. इसमें वी हैव लाइन नंबर 10 पे एक हम फाइल यूज करेंगे, IO manip, इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन, just to enhance our readability of the program and to have more fine computation. So we have initialized the variables, 3 parts of the program: initialization, processing and termination. So we have declared the variables over here: total, grade counter, student counter, counter, one and the same thing, and the grade itself, and of course the variable average. In the previous program we have declared this variable as integer. So we divided integers which actually truncated off the remainder. So the average wasn't computed correctly in the previous program. So in this program we have taken care and declared average as a double variable. Sir, what's the difference between float and double? It consumes a bit more memory space in terms of bytes. Double will consume more decimal numbers, consume more space. So is there a number of decimals defined or? No, normally you see a floating point number is displayed with a string of numbers, 82.345678, isn't it? In this program we will also learn how to resist those string of numbers up till 2 decimal point or 3 decimal point, along with rounding it off.
Actually, that's why IOMNF file is there. We'll take help from that file with the maybe the library defined function. Long int, higher data type of int, long int, unsigned long int. ठीक है, फिबोनाची सीरीज और ये जब इनकी एक्सपोनेंशियल कम्बिनेशन में इंक्रीज होती है डाटा टाइप, तो आप फिर इस तरह की चीज़ उसमें करते हैं. आप इसलिए कह रहे हैं कि ये जो डिवीजन हो रही है ये तो इंटीजर्स की हो रही है. देखिए इन्होंने कितना वैलिड क्वेश्चन किया. डिस्प्ले तो वो कर देगा, अगर 5 आए तो 5.0 कर देगा, मगर आपके क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन जरूर राइज हो रहा है कि एवरेज तो डबल है. एवरेज इज अ डबल इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय, दीज आर इंटीजर्स स्टिल. सो वी हैव टू डिवाइस सम मैकेनिज्म कि आपका आंसर ठीक आए. जी वही हम आज पढ़ेंगे, कास्टिंग, कि हम इंटीजर स्टे करते हुए भी उन वेरिएबल्स को टेम्पोरेरीली डबल ट्रीट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे. Sir, why don't we just change it from integer to तो हम टाइप कास्टिंग कौन सीखेंगे? क्या simplicity आ रही है? लेकिन टाइप कास्टिंग हमने सीखनी है. टाइप कास्टिंग स्टेट्स के आपने फॉर द टाइम बीइंग यू वांट टू कीप दिस वेरिएबल इंटीजर, यू वांट टू कीप इट, देयर इज अ कंपल्शन, बट यू कैन कन्वर्ट इट टू द हायर डाटा टाइप टेम्पोरेरीली just for your computation and come back to the integer. This is something typecasting. You are very right, declare all of them doubles, no need of casting. IOStream is there. IOStream is for C out and C in. IOMiner will be there to manipulate the output data to round off the output data. We will do that with some library function. Okay, initialization phase, total 0, grade counter 0. Done. तो वही बात है. अब आपको बहुत इजी लगेगी कि प्रोग्रामिंग में अब देयर इज नथिंग एज वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल ओवर हियर. So before going to while, prompt the user between validity and invalidity. Enter a grade or enter -1 to end. So user will input the grade. Grade will come over here for the very first user. The loop will check whether it's valid or not. It is not equal to -1, it's valid. Add it to the grade, add 1 to the grade counter, get the grade for next student. Why? Because we cannot go beyond while. We cannot go over here. So we have to put these two things within the loop as well for the second student and onwards. Isn't it? सेकेंड स्टूडेंट और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉम्प्ट आपको विद इन द डोमेन ऑफ वाइल ही लिखनी है. ओवर हियर सी आउट अगेन द सेम थिंग, एंटर ग्रेड फॉर सेकंड स्टूडेंट एक्चुअली एंड -1 टू एंड. सो यू हैव गॉट द ग्रेड फॉर सेकंड स्टूडेंट, इट विल गो देयर, इट विल बी चेक्ड वैलिड और नॉट. इफ इट इज वैलिड, रिपीट द प्रोसेस, कीप ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस फॉर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स till the time user press -1. देखिए वो तो हमने पहले कह दिया, हम स्टूडेंट्स के लिए तो ले ही नहीं रहे, हम ना यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि कितने. हमारा प्रोग्राम उससे ज़्यादा स्मार्ट है, isn't it? हम कह रहे हैं कि आपने जब भी रुकना है हमें बता दें, कंप्यूट द एवरेज. -1 जैसे ही आया प्रोग्राम रुक गया. नाउ द लास्ट फेज. लास्ट फेज में अब जो ग्रेड काउंटर वेरिएबल है इस पर चेक लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. Line number 45. What is 44? What it is stating? Grade counter. If it is run even once, true or false? One is not equal to 0. ये बात ठीक है कि गलत है? ठीक है, true है. इसमें इसको prove that. If it is 0, इसका मतलब है लूप चली नहीं, isn't it? True or false? False. 0 is not equal to 0. ये बात ठीक है कि गलत है? ये गलत है, एल्स चलेगा. तो एल्स में क्या डिस्प्ले होगा जी?
लाइन नंबर 55, नो ग्रेड्स वर एंटर्ड. आपने ग्रेड एंट्री नहीं किए तो एवरेज क्यों कंप्यूट करनी? तो ये एक्सेप्शन यहाँ हैंडल हुई है जी. हमने इफ से ही स्टार्ट की. ये देखिए लाइन नंबर 44, इफ grade counter is not equal to 0, compute the average in line number 47. We have yet to discuss line number 47. Average equals to total divided by counter. If it becomes false, line number 55, else क्या डिस्प्ले होगा? इसका मतलब है काउंटर की वैल्यू 0 है. अगर 1 भी होती तो एवरेज कंप्यूट हो जाती. नाउ कम टू द एवरेज कंप्यूटेशन पार्ट. लाइन नंबर 47, as we have discussed earlier, average is a double, total is a integer, grade counter is an integer. If we divide these, integer division will truncate the remainder, isn't it? So we need to have some solution to make this total as double or convert it at least temporarily to double. So the process is called typecasting. So by writing this syntax, this total, which is actually an integer, will be treated as double. So now total is double. Problem with Typecasting is basically changing the data type of a variable for some instance. yes, temporarily. Now average is double, total is double. Now problem with C++ compiler is it will not divide the different data types in numerator and denominator. Now what is the data type of total after conversion? What is data type of grade counter? It is still in. Now what is the solution? No, we are not converting. These will be converted by default. So static typecast treat total as a double temporarily. It is used because dividing two integers will truncate the remainder. Now what about grade counter? Grade counter is an integer, but it gets promoted to. So average is a double, total is now a double, grade counter also a double. So we'll get the correct average, isn't it? वो स्टेटमेंट आप पढ़ें कमेंट में. C++ उसको प्रमोट कर देती है खुद से जहां पर टाइप कास्टिंग यूज होती है. Now your average could be 81.566. Like this string, we have to curtail it as well. ये एवरेज आपके पास आ गई है. अब आप चाहते हैं आप टिल 2 डेसिमल पॉइंट तक आए, एवरेज ठीक लगे, राउंड ऑफ भी हुई हो. हाँ तो टेम्परेरी. इसके बाद एक्चुअली उसकी डाटा टाइप क्या है? इंट. ठीक है, आप उसको इंट भी ट्रीट कर सकते हैं, उसको दोबारा कन्वर्ट करके डबल भी ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, फिर तो वही बात आगे कास्टिंग कौन समझेगा. एट टाइम्स देयर आर रिक्वायरमेंट्स कि जहां पर आपको इंटीजर की डाटा टाइप, वेरिएबल्स की डाटा टाइप को चेंज नहीं करना, तो आप उसको टेम्परेरी कास्ट कर सकते. वापस इंट होती है. ठीक है, और यू कैन यूज इट एज यू कैन. नहीं, इसमें यह है कि नॉर्मली न्यूमिनेटर को करते हैं, डिनोमिनेटर गोज टू द डिफॉल्ट वैल्यू. ठीक है जी. देखिए हर एक का अपना सिंटेक्स है. इफ यू वायलेट द सिंटेक्स इट विल नॉट रन. अगर आप समझते हैं लिख के चल पड़ा तो इट मींस इट्स अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स. ठीक है, यही है आपके सामने. देखिए मेमोरी में आपके एक्चुअली वो इंटीजर ही स्टोर हुआ है. ठीक है ना, तो टेम्परेरीली उसको उसकी स्पेस सेपरेट वो एलोकेट कर देगा जहां पर डबल की कंप्यूटेशन होगी. हाँ, फिर उसके लिए भी ये बेहतर किया कि आप तो आप परमानेंट उसको डबल ही ट्रीट करें ना, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं. अगर आपको डबल चाहिए कीप ऑन कास्टिंग, isn't it? वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या इक्वेशन के लिए चाहिए होती. हाँ, उसकी डाटा टाइप चेंज हो जाएगी जी. उसके बाद नहीं, कहीं भी इट डिपेंड्स कि आप कहाँ यूज कर रहे हैं. ठीक है जी, एनी नंबर. अच्छा जी, नाउ वी हैव टू कंप्यूट, गेट द आंसर करेक्ट. लाइन नंबर 50,
set precision is the library function which will do this thing, this implementation of this line up till the second decimal point. Okay, thank you. उसके लिए सर फिर वो आईओ मैथ लिखेंगे आयो मैनिप, अगर आप वो नहीं लिखेंगे आयो मैनिप तो ये एरर आ जाएगा. सॉरी, मैथ डॉट एलपी उसके सेपरेट फंक्शंस. मैथ्स लाइब्रेरी के जो फंक्शंस हैं, देखिए इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन आपके आउटपुट को मैनिपुलेट करती है. मैथ्स लाइब्रेरी फॉर साइन, कोसाइन, टेंजेंट, एब्सोल्यूट, लॉग, नेचुरल लॉग, log to the base 10. मैथ में नहीं आता नहीं, set precision comes in IO manip. IO manip. First slide. वहाँ पर आपने लिखा हुआ using std set precision, वो हम लोग namespace में नहीं आ सकते. वो considered है एक्चुअली, ये मैंने ऐड ऑन लिखा हुआ है. चलेगा. IO manip जरूर इंक्लूड करनी है. हाँ, नेम स्पेस दिस इज मोर देन इनफ. या आप एक चीज लिखते हैं, इसकी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. बस सही चुने. सेट आयो मैनिप करें, आयो मैनिप करें, यहाँ पर आके सेट प्रिसीजन में इनपुट दे दें. बस दैट्स इट, इट विल रन. जी ठीक है, वन बाय वन. जी, इफ यू हैव टू include some library function which is related to manipulation of the data. For example, we want to manipulate our output in this case. So we have used, this is our output, average. So we have used set precision function, which will actually truncate it up till 2 decimal points and round it off as well while displaying the result. There are other functions as well. For example, set W, set width, in order to give spaces. वो हम आगे चल के यूज करेंगे वो. So do we need to declare the set precision without That keyword, Yes. no, that is not required. Just simply write using namespace. It shall work. जी. Sorry? No, we are not using IOManip for typecasting. We are using IOManip for set precision. तो उसको 3 कर दें. इनपुट आपकी पास है, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप उसको चेंज कर दें. ठीक है, एनी क्वेश्चन? फाइन. अब इसके आउटपुट देख लें और इसको एक दफा रन करके भी जरूर देख लें जिसमें आपके फर्दर. तो ये दिस इज अ जनरलाइज्ड प्रोग्राम. वी हैवंट प्रॉम्प्टेड द यूजर टू एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. यूजर इज कीप ऑन एंटरिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द वे ही वांट्स, इजंट इट? एंड पे आप देखें जैसे ही -1 किया इनपुट स्टॉप होगी. डू यू हैव द फील के फर्स्ट स्टूडेंट में मार्क्स वाइल से पहले इनपुट हुए थे? डू यू हैव द एनी फीलिंग ओवर हियर आफ्टर एंटरिंग द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट? यू आर इनसाइड द लूप. इफ दे आर वैलिड, सेकंड and onward are actually ticking from that second input statement within the loop. तो आउटपुट तो कोई ऐसी फील नहीं है कि हमने वाइल से पहले फर्स्ट स्टूडेंट के लिए या वाइल के अंदर लिए. हमने यहाँ पर इनपुट ली, चेक किया 75 वैलिड, ऐड कर दिया. सेकेंडली लिखा हुआ यहाँ सी आउट, सीन 94 वैलिड, चेक अगेन, कीप द रन द प्रोसेस, कीप ऑन चेकिंग. एज द यूजर प्रेसेस -1, डू नॉट रन, कम आउट, चेक करें काउंटर 0 है या नहीं. 0 नहीं है, compute the average. Typecasting, and by the end set precision 2 decimal points. Sir, can you please explain how to change it to decimal Using set precision function at line number 50. Set precision 2, just read the comment. Set precision 2 prints 2 decimal point to fit precision as well using IOManip header file. Yes. चलिए जी, लेट्स हैव अ ब्रेक. फिर हम कंटिन्यू करेंगे.